Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar where we'll talk about how warehousing has changed in the last uh, 1 decade and how now warehousing is a plug-and-play system which can enable from a new age companies to establish organizations to reduce their cost minimum by 20%. Uh, that is we're going to talk about. This is little something about me. I have been it's a decade of experience where I started warehousing and worked with renowned brands. And I can easily tell the difference between how it was 10 years back and today, how easy we have made this for you. So this is what the webinar will all be about. So I think warehousing, of course, now we after the whole revolution and evolution in the warehousing sector, how the warehousing, uh, the decentralization of the warehousing, how it has come into action is what I'm going to talk about. कि 10 साल पहले वेयरहाउसिंग करना और उसके बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ा एक प्राइस क्वेश्चन दिमाग में आता था कि कहाँ से हम इतने पैसे एक वेयरहाउस बनाना. इट वाज अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस इन योर माइंड कि इसको बनाएंगे भी तो कैसे. अब हम लोगों ने इसको इतना प्लग एंड प्ले सिस्टम में कर दिया है कि आपको सिर्फ अपनी इन्वेंट्री रखनी है एंड आप लोग वेयर हाउसिंग स्टार्ट कर सकते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, एक वेयर हाउस नहीं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल वेयर हाउसेस just by signing couple of agreements and understanding the whole process. We can give you the warehousing in the very easy. It comes to you. So the estimated value globally is huge. We're talking about billions of dollars in the Indian market only. And after the Make in India uh, campaign that has been launched, so I think India में warehousing की वो जो boom आया है in the last 5 to 10 years, it has been amazing. So मैं ये बताऊंगा कि how Shiprocket can make it further easy for you. कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन, इन सब चीजों के को एवरी डे इस चीज में अपना टाइम ना वो करते हुए सिर्फ एक ब्रांड बिल्डिंग और ब्रांड मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में कैसे आप कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट. सो बेसिकली मैं बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट करूंगा कि हाउ वेयर हाउस जब एक दिमाग में वर्ड आता है कि आज मैं अगर अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ और वेयर हाउसिंग, मेरे को एक वेयर हाउस खोलना है, तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि आपने अपनी कंपनी फॉर एग्जांपल आपने गुड़गांव से स्टार्ट करी या दिल्ली से स्टार्ट करी. अब आपके ऑर्डर साउथ, वेस्ट और ईस्ट से आ रहे हैं. सो बहुत ही बेसिक है कि गुड़गांव में प्रोडक्ट पड़ा है, ऑर्डर आया है आपका मुंबई से या नागपुर से और फर्दर डाउन इन महाराष्ट्र और प्रॉब्ली समवेयर इन द विलेज फ्रॉम इन साउथ. तो अब ये आपको वहां से ऑर्डर पहुंचाने में जो आपका टर्न अराउंड टाइम, जो डिलीवरी टाइम लगता है, वो आप 4 से 5 दिन यहाँ से गुड़गांव से ऑर्डर पिक होगा, वहां तक पहुंचेगा, डिलीवर होगा. उसके बाद काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट वी आर लिविंग इन, इतना आप कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको एड्स फॉलो करती हैं. जब तक आपका प्रोडक्ट वहां पहुंचेगा तब तक क्लाइंट को कोई और एड कैप्चर कर लेती है, उसने कुछ और ऑर्डर कर दिया होता है जो उसको 2 दिन में पहुंच जाता है. इससे आपका रिटर्न, आपका डिलीवरी रिजेक्शन, जिसे आरटीओ बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो नाउ कंपैरेटिवली अब आप सोचिए कि आपका ऑर्डर भी महाराष्ट्र से कहीं आया है और आपकी इन्वेंट्री भी मुंबई या कहीं महाराष्ट्र में पड़ी है. बिफोर द कस्टमर इवन वांट्स टू चेंज हिज माइंड, योर द प्रोडक्ट इज लाइंग विद द कस्टमर. सो इससे ऑफ कोर्स आपके डिलीवरी चार्जेस फ्रॉम गुड़गांव to Mumbai, of course, you save around 20-25% on those charges. And then also the turnaround time, जहाँ 5 दिन में आपका एक प्रोडक्ट पहुंच रहा था, अब 2 दिन के अंदर, इनफैक्ट फास्टर देन 2 days, 1.5 day में प्रोडक्ट आपका क्लाइंट के पास पहुंच जाता है, जिससे आपका आरटीओ आरटीओ बहुत ज्यादा कम होता है. एंड दैट इज हाउ, सी इफ यू कैलकुलेट द होल कॉस्ट फ्रॉम डिलीवरी कॉस्ट में सेविंग, देन आरटीओ कॉस्ट, ऑफ कोर्स अगर क्लाइंट के वहां पर अगर वो रिजेक्शन करता है तो आरटीओ का पैसा भी आप ही खुद पे करना है. सो दैट इज व्हाट द
the saving that we are getting into right now. The storage space, the manpower deployment, the warehousing operations. Shiprocket is now sitting on around 50 warehouses pan India in 12 cities. So basically, the D2C universe lies in 12 to 13 cities in the country. जहाँ से सारी main orders आते हैं e-commerce के all the marketplaces. And 12 cities में Shiprocket के अपने warehouse, 49 warehouses we are sitting on. And the infrastructure, the technology, uh, everything is so top notch. We guys are talking about delivering 80,000 to 1 lakh orders in a day from all the warehouses जो Shiprocket orders process करता है. And तो आप ये सोचिए कि किस level पे our technologies and our infra would be synchronized, and that is what the value we get just by you don't even have to book a proper space there. All you have to do is just start your business the way it is. आपने 1000 यूनिट से बिजनेस शुरू करना है तो आप 1000 यूनिट का ही पैसा देंगे. अगर आपको 1 लाख यूनिट से करना है तो आप इट्स नॉट दैट कि आपको वेयर हाउस लेना है तो पूरा 10,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस ले लिया, उसका मंथली एक फिक्स कॉस्ट बन गया. आपका बिजनेस जैसे बड़ा होगा या छोटा होगा उसी हिसाब से आपको पैसे देने हैं. एंड दैट इज व्हाट वी गाइस आर चार्जिंग फॉर. So, of course, warehousing, when we talk about, so warehousing के challenges बहुत सारे हैं. For example, चलिए एक normal बात करते हैं कि अपना warehouse चलाना एक बहुत easy, मतलब बहुत question मेरे को आते हैं बहुत सारे clients से कि यार मैं अपना warehouse क्यों नहीं चला सकता हूँ, और why Shiprocket, मतलब why should I outsource it to you. And so मेरा एक बहुत ही बहुत बहुत बेसिक से इसके पॉइंट्स हैं. आप अपना वेयरहाउस कितने खोल पाओगे? नंबर 1, ऑफ कोर्स योर वेयरहाउसिंग. आपने एक जगह मदर वेयरहाउस ले लिया है. अब नाउ आपके ऑर्डर्स, अगर आप नॉर्थ में बैठे हैं, आपकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ द कंट्री से अगर द ऑर्डर फ्लो इज कमिंग, हाउ मेनी वेयरहाउसेस यू गोना ओपन ऑन योर ओन? योर वेयरहाउसिंग खोलने के लिए यू हैव टू the security deposits, the infrastructure. There is a lot of capital that you are blocking to open and run a warehouse, wherein you can just outsource it and use that capital in your product, in your brand building, in your marketing, and elsewhere. And that is why the plug and play system of warehousing is in place. That is why we were able to turn the brand's optimization and the brand's top line revenue upside down, just because their supply chain patterns, their daily supply chain hazards were taken care by us. And that is how we get the value by putting your inventory. We tell you the inventory planning. We tell you कि एक space को optimize कैसे किया जाता है. अब आप अपने वेयर हाउस में किसी तरीके से भी एक के ऊपर एक डब्बा पड़ा है, पैलेट्स कहीं पे भी पड़े हैं, बट ऑफ कोर्स we are giving you a benefit of a shared space. So think of it as an Uber pool. This is a shared space where you are just paying for the space that you own in that warehouse, and it depends upon the quantum of your business. आपका business जिस तरीके से बढ़ेगा उसी तरीके से आप space बढ़ाइए. और we give you, it is very easy for expansion. आप आज 10,000 square feet से शुरू होते हैं and you want to increase another 5,000 square feet की यार मैं marketing ज़्यादा कर रहा हूँ and now my traffic on my website और marketplace से मुझे अच्छा traction आ रहा है. So can you increase the space for us? And we have all those things in place कि मैं एक छोटे से notice period पे हम लोग आपका space increase कर सकते हैं. So I think I'm getting a lot of questions also. Let me read few questions and answer. Okay, the question is, where is your head office in Mumbai? I mean, we have warehouses in Mumbai. Our head office is in Delhi. In Delhi NCR we operate, and as I mentioned earlier, we have 49 warehouses. So if you guys are interested, किसी को भी कहीं पे भी warehouse visit, warehouse operation समझना है, you can register and put an email. It is very easy for us to show you how the process is. आपका material inward से लेकर outward तक कैसा जाएगा, आपका material अगर हमारे warehouse में कैसे store होता है, technology कैसे use होती है, scanning कैसे होती है. So we will
इट इज ऑफ कोर्स वेयर हाउसिंग एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, और इसमें इतनी सारी एवरी स्टेप पे इतनी डिटेलिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अब आप इस कुछ भी चीज ना मेमोरी डिपेंडेंट या ह्यूमन डिपेंडेंसी पे नहीं है, क्योंकि 1 लाख स्क्वायर फीट 1.5 लाख स्क्वायर फीट बड़े वेयर हाउसेज हैं, सारी चीज टेक्नोलॉजी से सिंक्रोनाइज है, सब चीजें बार कोडेड है, कौन सी चीज कहाँ पर रखी जाती है उसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस है, जमीन से ऊपर कितनी स्टैकिंग करनी चाहिए उसका, हर एक चीज का एक लॉजिक है, हर एक चीज की एक कॉस्ट है, जो हम आपको पूरी डिटेल में एक बाइफरकेशन से बता सकते हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। व्हाट इज द मिनिमम पे फॉर द वेयर हाउस? सो जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम पे कुछ नहीं है, एक बेसिक आपको एक यूनिट का हम आपको प्राइस बता देंगे। सो से अगेन, नॉट इवन अ बॉक्स, वी विल टेल यू कि अगर आपने एक प्रोडक्ट भी अगर हमारे वेयर हाउस में रखा तो उसका क्या कॉस्ट आएगा, और जितने आप प्रोडक्ट्स लगते जाएंगे उसको बस आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इतना इजी कॉस्ट स्ट्रक्चर है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर अस टू एक्सप्लेन कि यू विल सी कि हम किस तरीके से इस चीज में आपकी वैल्यू ऐड करें। I'll tell you, technology of course plays the most important part. अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत सारे लोगों को, जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम कईयों को नॉलेज है, कईयों को नहीं है, बट जिनको नहीं है मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपके वेयर हाउसेस जिस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं वो वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब एक वेयर हाउस में उस इन्वेंट्री का क्या हो रहा है, कैसे वो अंदर आ रही है बाहर जा रही है, वो सिर्फ आपको एक स्क्रीन पे दिखता है। ऑफकोर्स ना वो मैनुअल आप करेंगे तो उसमें एरर बहुत है। सो WMS is very essential to make a warehouse work at the optimum price, at the optimum cost. आपको WMS ये सब कुछ चीजें बताता है कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कौन से आपके टॉप सेलिंग SKUs हैं, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, पैकेजिंग मटेरियल है या नहीं है, उसके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, Amazon से अगर ऑर्डर आया है तो आप कितने बजे आपको वो पैक करके रेडी करना है, मिंत्रा से आया है तो कितने बजे पैक करके रेडी करना है। सो ये सारी इतनी सारे जो कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस हैं, ये आपको WMS इन्फॉर्म करता है बिफोर कि आपका SLA ब्रीच भी ना हो, और वेयर हाउस उसको टाइम पे मैनिफेस्ट या उसको हैंडओवर के लिए रेडी करते हैं। So, warehousing management system, Shiprocket has an in-house warehousing management system. It's called Maven. Maven, अगर आप एक warehousing management system पे हैं already, so Maven easily आके उससे integrate हो जाएगा। अब Maven, what it does is Maven and a layer before Maven that we call an SRF layer. So ये जो SRF और Maven का जो combo है, फॉर एग्जाम्पल आपका Amazon से ऑर्डर आता है, अब Amazon से ऑर्डर आपके WMS पे आता है, उस WMS से मेवन और जो SRF की लेयर है वो उस ऑर्डर को पुल कर लेती है, एंड साइमल्टेनियसली और SRF की जो लेयर है दैट इज गोइंग एंड गेटिंग द AWB नंबर फ्रॉम द कोरियर पैनल। एंड WMS आपको जहां का भी ऑर्डर है, जहां पर भी आपकी नियरेस्ट इन्वेंट्री पड़ी है, वहीं पे उसी वेयर हाउस में आपको शो होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम कोलकाता एंड इफ योर इन्वेंट्री इज लाइंग इन कोलकाता, दैट विल बी शोन देयर ओनली, कि वेयर हाउस मैनेजर कोलकाता में देखेगा कि ऑर्डर आया है, ये यहाँ पर ये डिस्पैच करना है, इसको डिस्पैचिंग टाइम कितने बजे है, और इसको वो हैंडओवर कोरियर हैंडओवर के लिए टाइमली तैयार करके रखता है। दैट इज व्हाट द WMS इज ऑल अबाउट। Very good question. I'll read out the question first. Being an industry that is quite volatile, in scenario where there is a requirement for partial scale up, seasonal, what are the options available and what is the percentage of scale possible? So I'll answer this. So as I mentioned earlier, it is warehousing. We've made it as pay as you go, and we kind of expand and contract as per the business that you're in. So for example, there are a lot of clients that are sitting in our warehouses, which have the products are seasonal. For example, the winter wear, and winters में उनकी sale of course बहुत ऊपर चली जाती है. And as I mentioned, there is the fixed cost is as per your business. So for example, आप बोलते हैं कि नवंबर से फरवरी तक का बिजनेस करना है मेरे को विंटर वेयर में, and you give us a projection कि मेरे पूरे साल का जो मैक्सिमम स्पाइक है वो इन 4 से 5 महीनों में रहता है,
we'll give you that percent of uh, of space available in the warehouse, the manpower. We'll make that arrangement for you, and the percentage of scale is not even defined. I mean, you tell me the kind of quantum you have for your business, and we'll give you that kind of space and the manpower and the cost. So the percentage of scale is will be defined by you because it's your business. You tell me कि यार मैं 1 लाख यूनिट एक महीने में प्रोसेस करना चाहता हूँ. It's we will give you that kind of arrangement. So seasonal business, uh, uh, हमारे पास बहुत सारे हैं and we kind of manage them very nicely and we understand. Uh, it is a very good question for people कि अब आपको 4 महीने के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए और बाकी 8 महीने आपको बहुत ही मिनिमल चाहिए. So आप अभी अपने वेयर हाउस में नहीं कर पाएंगे. So that is why what we can do that for you. We can do that arrangement for you. So I hope I've answered your question. So I have a question from Vineet कि warehouse के लिए कितना budget चाहिए? Again, warehousing के लिए आपको budget उतना ही चाहिए जितना आप warehouse को use करना चाहते हैं. So warehousing budget will be defined as per आपको कितना business करना है हमारे साथ. आज आप अगर honestly अगर आप 1000 से स्टार्ट होते हैं तो आपकी जर्नी के साथ आपका warehousing space और arrangement भी बढ़ता जाएगा. Expansion is very easy और that is why and साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं. सो बेसिकली मार्केट प्लेस आजकल हमारी डिपेंडेंसी फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा द होल मार्केट प्लेस एरा हैज ऑफ कोर्स इट हैज अ बूम और जितनी हमारी सेल्स की डिपेंडेंसी मार्केट प्लेसेस पे है हम लोगों को बहुत ही डिटेल्ड हम लोगों ने अपने प्रोसेसेस इस तरीके से बना रखे हैं कि आप मार्केट प्लेस में कोई भी ऑर्डर आपका ब्रीच ना हो. सो फॉर एग्जांपल अब आप Amazon पे अगर प्लैटिनम सेलर हैं या टॉप सेलर हैं एंड पहली बात तो टू गेट अ स्लॉट for an Amazon warehouse or a Flipkart warehouse, I know it's a big hassle, but we have all our warehouses which are seller flex and seller smart activated. So आपका जो Amazon Prime tag है और seller smart tag है वो आपको शिपरॉकेट के सारे वेयर हाउस से मिल सकता है. सो यू कैन यूज आवर वेयर हाउस. आपके जो प्रोडक्ट होगा वो स्टिल प्राइम टैग के साथ ही पिकअप होगा और डिलीवर होगा. सो ये सारी चीजें हमने Amazon और फ्लिपकार्ट से हमने ऑडिट करा के अप्रूव कराए हैं हमारे वेयर हाउसेस एंड वेरी इजीली वी कैन गिव यू द सेम काइंड ऑफ द फंक्शनैलिटी द सेम काइंड ऑफ the status of Prime from our warehouse. Multiple order pickup times and of course our warehouses, most of our warehouses they run round the clock. So multiple order picking timings. दिन में 10 cut off times हैं, 10 बारी courier lineups होते हैं and we guys are pretty much aligned. हमारी technologies हमारे aligned हैं and of course जहाँ दिन का 80,000 to 1 लाख shipment हम process कर रहे हैं तो the alignment with the courier companies are very smooth, very, very easy. I will read out the questions simultaneously. I mean, people are asking that Shiprocket has a franchise. I mean, we do not have a franchise. We cannot use your warehousing spaces and open the warehouse. So basically, I would like to answer that question. A lot of questions are coming in that way. So I think improving warehousing connectivity. So most of our warehouses are open. They're very selected, with very strategically selected. I would say, key warehousing. Of course, all the warehousing area city के बाहर ही होते हैं, just because the warehouses spaces are huge. So city से हम कहाँ पर लेते हैं highway की connectivity? Is it a warehousing zone जहाँ transport आपके जितने भी vehicles हैं छोटे बड़े containers can reach there. So ये सारी चीजें हम ध्यान रख के एक warehouse बनाते हैं. Then warehouse बनाने के लिए उसमें जो security, the surveillance, of course everything is under a camera and आपका product जब तक जैसे ही हमारे warehouse में enter जहाँ होता है and जब निकल जाता है it is under 100% camera surveillance. We don't have blind spots.
Our warehouses are very meticulously formed in terms of the security guidelines, fire guidelines. Uh, so ये सारी चीजें अब you just have to imagine if you have your own warehouse, it is a never-ending expenditure that you're doing comparatively to how you can just outsource it to us and we'll take care of this because we have all these things, all the compliances, all the licenses, PASI license, and other product storage licenses also in place. So it is uh, very convenient for the clients and the brands to opt this. So any other if you have whatever the queries that you have, I will be telling you the email address at the end of the slide where you can. How should I? I'll break it down for all of you. कि technology कैसे एक warehousing में आपके product को आपके product के turnaround time को कम कर सकती है and how you can track your product from wherever you're sitting, how your client can customer who's ordered from you can track your product from wherever you're sitting. So basically, considering the whole warehousing network that we have, बहुत ही high probability है कि जहाँ से आपका order इंडिया में आ रहा है हमारे warehouses वहाँ पर होंगे. Like you said, 45 plus fulfillment centers. Of course, we have increased. We have added 4 more to our network. अभी हम 49, 50 पे touch कर रहे हैं. Just because now the penetration in tier 2, tier 3 is also the e-commerce penetration is increasing day by day over there. So so from Lucknow to you know other tier 2s where we can have the warehouse में जहाँ आपकी ईस्ट रीजन में आपकी ईस्ट बेल्ट में डिलीवरीज हैं, पंजाब साइड में आपकी डिलीवरीज हैं, तो हमारे वेयरहाउसेस ऑलरेडी वहाँ पर हैं टू टेक केयर ऑफ द फास्टर डिलीवरीज. So हमारे जितने भी in-house WMS है, we guys are very fluid in terms of all the marketplaces integration. आप आपका WMS जितने भी marketplaces आप जितने भी listed हैं, we can process those orders from our warehouses. So and according to the SLA given by the marketplace. So those are the things our technology. WMS, as I explained earlier, warehousing management system and order management system. Basically, आपकी जो websites हैं order management system पे जो बने होते हैं वहाँ से आपकी orders हमारे पास reroute होके आते हैं, and that is how we process those orders through WMS. And of course, we are covering more than 24,000 pin codes wherever. क्योंकि warehousing network इतना ज़्यादा है तो this is hardly a pin code that's is not covered by us. Shipping cost, of course, अगर मैं आपको zone C और D के orders आपके zone A and B में जब fall करेंगे तो your shipping cost is going to be considerably less. And your RTO जैसे मैंने बताया before your client changes his thought process कि यार ये product अब मेरे को इतने दिन में नहीं मिला है तो उसको cancel कर दूं तब तक वो दूसरा खरीद लेता है. So अगर मैं उसको 2 दिन में ही product पहुंचा देता हूं तो आपका RTO considerably बहुत कम हो जाएगा और RTO कम होना it's a huge cost saving. So I'll read out a question here. So Divakar has asked a question. How do you charge cost for space? So we will give you a per cubic feet cost. That is what the matrix we work on. Warehouse में हम आपको एक per cubic feet का cost दे देंगे. अब एक per cubic feet में आपके कितने products, कितने units आ सकते हैं, उसका आपको एक cost पता लग जाएगा. And that is what your fixed cost is going to be. आपका inventory एक महीने में आपने अगर 20,000 यूनिट अपने for example अगर हमारे warehouse में रखते हैं, that is the highest number. We will charge you on the highest number of units you've kept in the warehouse. And for example, next month you want to scale it up to 40,000, or you say कि अभी मैं product change कर रहा हूँ, whatever, you want to decrease it to 10,000 units. Your cost immediately is gonna be lesser just because you've probably taken a step back, correcting your inventory, changing your packaging. ये सब real life scenarios हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से
the brands, they put things on hold, they do not spend on marketing, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना होता है, पीछे वेबसाइट पे कुछ चेंज करना होता है. सो आपको वो फिक्स कॉस्ट उस टाइम पे जो आपका बिजनेस हिट ऑलरेडी आप ले रहे होंगे, बट आपको फिक्स कॉस्ट का हिट उतना नहीं लगेगा, जस्ट बिकॉज यू कैन रिड्यूस योर इन्वेंटरी स्पेस. एंड दैट इज द काइंड ऑफ, इट इज द होल प्रोसेस इज सो फ्लूइड कि यू विल सेव. जब आपका आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट हम कम कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर आपका किसी तरीके से किसी एक लोकेशन में, फॉर एग्जांपल यू टेल मी यू आर प्रोजेक्टिंग कि यार मुंबई में मैं 50% सेल्स करता हूँ, 2 महीने बाद 50% से 25% कम हो गया, अब आपको लगता है यार इस सेल्स और मेरा ऑर्डर वॉल्यूम ना बैंगलोर की तरफ चला गया है, आपका हम ऑटोमेटिकली योर space will be decreased in Mumbai, your cost will decrease in Mumbai where your business has also decreased. एंड जहां पर आपका बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, आप आपकी इन्वेंटरी रीराउटिंग, आपकी कॉस्ट हम वहां पर रीराउट कर देंगे. सो वी आर वी हैव मेड दिस सो फ्लूइड. द डायनामिक्स ऑफ supply chain is changing according to your business. I mean, long time back we never thought of that. So that is how fluid this whole system is. It's like we're trying to make it a plug and play of the warehousing. Reading the questions side by side. Great questions from GK. How do you ensure workplace safety, basically health and safety of the workers in the warehouse? Great question. So, as I mentioned the word compliance, our warehouses are fully government compliant, where of course अब हमारे warehouse में food and beverages भी stored है, food products, non-food products, perishable items, everything is stored under one roof. अब मैं how the storage is gonna be, food के साथ हमें किस तरीके से कहाँ पर food को store करना है, in which portion of the warehouse, किस पे रखना है, all our pest controls, termite controls, rodent controls, all these things are in place. That is why FSI license have been given to us, because ये basic hygiene quality checks हम पूरे करते हैं. There are audits that internal team of Shiprockets they do. We hire external auditors also to surprise audit our facilities pan India, just because we guys are very conscious about taking care of the health and hygiene and the safety of the warehouse. And of course now the people working in the warehouse, everybody is according to the government's payment structure. All the minimum wages, all the PFs and everything in detail is taken care of. So ये सारे licenses हमारे सारे warehouses पे displayed हैं. So I mean, we are in this business for a very long time now, and we understand all the intricacies of the compliances, how if we are not in compliance, how it can affect your business, just because there are so many brands working from our warehouse, so we cannot just overlook any detail of the compliance. So that is, so our compliance team makes sure कि हर चीज highly compliant, all the compliances are followed. So I would like to know about I'm getting a lot of questions here. So a great question. How do you manage returns? The name is not given, but a great question. I'll take that up. So I'll take a very good use case scenario of सबसे ज़्यादा returns जो detailed return होता है वो apparel में होता है. कि अब आप सोचिए, आपने मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न से एक टी शर्ट ऑर्डर करी है, आपने टी शर्ट या जैकेट आपने खुली ट्राई करी, आपको पसंद नहीं आई, आपने बहुत इजीली उसको रिटर्न फाइल किया ऐप पे. अब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दे डोंट थिंक वो किसी भी तरीके से अब हमारे तक वेयर हाउस में पहुंचते हैं. नाउ हाउ वी रिटर्न प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ man, machine and methodology, I'll brief you about it. How our manpower is trained, how our technologies is synchronized returns को handle करने के लिए, and what kind of infra do we have in our warehouse to ensure कि आपकी वो t-shirt या वो jacket retagging, ironing, stain removing के बाद जल्दी से एक sellable inventory बन जाए. क्योंकि अब जिस कस्टमर ने अगर ट्राई करके रिटर्न किया है, अब उस पे कभी स्टेन्स हैं, कभी उस पे टैग नहीं है, कभी रास्ते में टैग टूट गया है, प्रॉब्ली देयर इज
जो उसमें पेपर्स होते हैं, the collars होते हैं shirts के, वो सारे it's in a very bad state. So basically, we have in WMS we have a great return process. Every time अगर the return बेचने लायक है वो product, तो उसका एक अलग process है, वो अब नहीं बिक सकता, उसका एक अलग process है. इस टी शर्ट को कितने तरीके से, या इस अपैरल को, या इस शूज को कितने तरीके से चेक करना है, उसके एक एसओपी है. ये सब जैसे ही आप उसको अगर फॉर एग्जांपल आप एक अपैरल कम्स टू द warehouse which is a customer initiated return that we call it. So this now उसको किस तरीके से कितने एंगल्स से चेक करके उसके गुड एंड बैड्स देखने हैं, उसको रीटैगिंग करना है, उसको आयन करना है, उसको कैसे सेलेबल बनाना है, that is what we take care of. तो रिटर्न्स का एक पूरा एक प्रोसेस है. I would of course, if you are more keen on it, if your product category lies in where the returns are bothering you, we guys take care of the returns really nicely. So I would you can email us. I will leave the email address at the end of this, and we can I would love to take up all the queries, and I'll answer all the queries coming on the email. So I will take one or two more questions quickly. Along with warehousing services, do you have any last mile options? Yes, we Shiprocket's main business is the last mile delivery. We guys are the aggregators, very prominent aggregators of the industry. So last mile operations. See, I mean, it's warehouse के साथ जितनी भी services जुड़ी हुई हैं, B2B surface, last mile delivery, technology, packaging, everything. We give you a solution for everything. I mean, it is not कि आप, it is kind of it considered as a one-stop shop. कि आपको हम पैकेजिंग दे सकते हैं, you can give us packaging requirements. आपको you want to go plastic free. Most of the brands are going for a plastic free option these days. We'll provide you all the hexa rolls, all kind of packaging. You want to make it fancy, you want to make it practical. So those are all the options. Once you get in touch with us, we can sit. So basically, it is not something we're selling. It is a solution that we are going to provide. We're going to understand your business requirements. We're going to understand more about your product. कि आपका product कैसे स्टोर होता है, आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, आपको टेक्नोलॉजी में अभी कैसे आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, एंड हम पूरा समझने के बाद ही we provide you a solution where we tell you month by month how we can decrease your cost if you start the warehousing with us, and that is the real, that is what we've been doing. I'll take up. You can see the email address is right there, and I'll take up one or two more questions before we conclude the whole thing. Sudesh has asked a great question: is WMS work with multi-location if items are not available in primary location? Yes, it does. For example, आपका एक अपना मदर वेयर हाउस है. मदर वेयर हाउस के बाद आपने 3 जगह शिपरॉकेट की वेयर हाउसेस ले ली हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री आपके शिपरॉकेट के वेयर हाउसेस में या कहीं और वेयर हाउसेस में नहीं है, देन ऑटोमेटिकली द WMS आपके मदर वेयर हाउस में जाके वो इन्वेंट्री या उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए इन्वेंट्री खोजेगा. WMS का काम ये है, जब तक उसको सब जगह से, चाइल्ड वेयर हाउसेस हो या पेरेंट वेयर हाउसेस हो, जब तक उसको इन्वेंट्री उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए इन्वेंट्री नहीं मिल जाती, इट विल कीप सर्चिंग फॉर दैट. एंड जहां अगर फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक है सारे वेयर हाउसेस से, देन योर ऑर्डर्स, आइदर वो ऑर्डर लगेगा ही नहीं, अगर वो लगेगा और इन्वेंट्री नहीं है तो इट विल fall as a failed, it will come as a failed order. So yes, the WMS will work with the visibility of pan India. Wherever your inventory is lying in the country, it will search for it and it will try to process the order. Govind has asked a question: do we have an agreement for warehouse if you want to start a warehouse? You rent a warehouse if you process of developing. So basically, yes, all you have to do is just sign an agreement with us to start the warehousing, and we'll tell you every
SOP इन डिटेल हम आपको देंगे कि हम आपका प्रोडक्ट इस तरीके से आपका प्रोसेस फॉलो करेंगे. We'll sign on it and वीकली आपको आपके रिव्यूज होंगे. मतलब we will give you people who will pick up your phone you know when you need an assistance. So it is a you know it is a human touch with technology. We will not just leave you with a chat bot कि आप ऐप से ही बात करते रहें. There will be a person who will be answering your call on the other side of it, who will give you. We make sure our resolution times, our issue resolving times are much lesser, just because we understand ki, every order how important it is. So we will be there to assist you. I think I've pretty much talked about. I'm getting a lot of questions about RTO that I've talked about, returns, WMS. Yes, Sanjay. For fashion products, we do provide refurbishing and ironing of the products, as I mentioned. और जल्द से जल्द आपका जो रिटर्न है, कस्टमर इनिशिएटेड है या आरटीओ है, हम उसको फटाफट क्वालिटी चेक करके उसको रिफर्बिश करके we'll try to make it sellable. So yes, we do that services. Yes, you can see the email ID. A lot of people want to get in touch. I can see email ID fulfillment.sales@shiprocket.com. आप उस पर डिटेल में अपनी ईमेल्स रखिए. आई मेक श्योर विद इन 24 आवर्स यू विल बी रिवर्टेड बैक. उस पर हम रिप्लाई करेंगे. विल गिव यू द नंबर्स. विल टॉक अबाउट कि आपकी क्या अभी किस तरीके से वेयर हाउसिंग आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको कैसे चाहिए. हमारे कस्टम मेड सॉल्यूशंस हैं. आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका मैन्युफैक्चरर नॉर्थ में है, आपका मदर वेयर हाउस वेस्ट में है, आपके ऑर्डर साउथ से आ रहे हैं. we have it all figured out. So we can make a very easy plan कि मैन्युफैक्चरिंग से आपके मदर वेयर हाउस पे या शिपरॉकेट वेयर हाउस पे कैसे आएगा. So वो सारी solution designing हम आपके लिए करेंगे. And that is what our main that is what we do for most of the brands. Sabrish, yes, there will be and MIS जो आपकी WMS में सारी reports in regards to your inventory, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, टॉप सेलिंग SKU का पैकेजिंग है नहीं है, टॉप सेलिंग SKU के जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज पे आपकी जो रेड फ्लैगिंग लगी होती है वो लग जाएगी. कि फॉर एग्जांपल कि ये मेरा टॉप सेलिंग SKU है, ये तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो WMS आपको ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग करेगा कि इसके 500 से कम यूनिट रह गए हैं, आप इसको रिप्लेनिश कीजिए. इंडिया में किस लोकेशन में सबसे ज्यादा आपकी ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव आपकी कहाँ रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो सारी चीजें इट्स वी विल बी टेलिंग यू ऑन अ डे टू डे बेसिस. बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट विद यू ऑन डे वन with the learning, and of course आप देखेंगे month by month how that learning and your costs are going to evolve in terms of the technology and in terms of your client experience. I think I have taken up a lot of questions. I'm getting a lot of repeated questions as well. You want to Divakar, you want to bring down your delivery time? Write to us. We will ensure कि आपका ऑर्डर जहाँ से आ रहे हैं, हमारा वेयर हाउस वहाँ पर वहाँ सबसे करीब हम आपका कौन सा वेयर हाउस दे सकते हैं, आपका डिलीवरी टाइम 4 दिन का है, 5 दिन का है, हम कितना उसको रिड्यूस कर सकते हैं. All these things we can talk about. Please write to us. Kiran, how do you handle counterfeit products? We do have a strict compliance, and of course fake products, copy products आजकल जो बहुत चल रहा है, anything which is against the government regulations. Before signing the agreement, हम HSN codes अपने legal से check करवाते हैं, where legal gives a sign off कि यार ये HSN code is as per the government regulations. If we are in doubt, then of course अगर counterfeit product होगा तो conversation और वो deal पे हम उसी तरीके से client को inform कर देते हैं that we cannot go forward just because everything is super strict and super compliant here. Okay, Sameer, you're from Mumbai. Your orders are coming from north, and
you want a warehouse in North, yes, please email us on this fulfillment.sales@shiprocket.com. I'll be more than happy to talk to you, understand. Dhruv, great question. How do you address products with limited runs and multiple SKUs for, say, a category like jewelry? Uh, yes, there are a lot of categories जहाँ SKUs बहुत सारे होते हैं, and of course एक SKU की sale comparatively अगर आप देखें तो मतलब number of SKUs will be higher. But that is how the technology is pretty much capable of handling this kind of business requirement. A lot of our clients in beauty and personal care, like we working with Mama Earth, we working with M Cafe, where as every month there are SKUs coming in. We working with Fab India. Apparel has a lot of SKUs. So overall technology is aptly designed to handle product categories or business requirements with high SKUs. Our productivity is kind of separate. It's kind of different in terms of if your brand has lesser SKUs and higher SKUs, but we certainly do have the capability to manage that. What are the locations of your warehouses in India? Ujjwal, I will be, please write to us. I'll be happy to share all the locations on email. Sabrish, great question. How, apart from the fixed costs, what will be the variable cost incurred? Variable cost is as per the business that you are. Your business quantum will decide the variable cost. आपका एक दिन का कितना थ्रूपुट है, कितना इनबाउंड है, कितनी इन्वेंट्री आ रही है, कितने प्रोडक्ट्स, कितने ऑर्डर्स बाहर जा रहे हैं, एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स जा रहे हैं, उसकी पैकेजिंग की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, थोड़ी डिटेल रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी चेक की कितनी रिक्वायरमेंट है. Every step will define your variable cost. आपको प्रोडक्ट में सैंपल्स फ्री डलवाने हैं, जेस्चर कार्ड्स डलवाने हैं, थैंक यू नोट्स डलवाने हैं. Every step will define your cost, and we do that for a lot of clients. So एक ब्लैंकेट रैक रेट नहीं है वेरिएबल कॉस्ट का. वो मैं आपसे बात करूंगा, समझूंगा आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट, उसके बाद एक कॉस्ट निकल के आती है. How is the logistic cost handled from the mother warehouse to the Shiprocket warehouse? Good question, Amit. We will provide you a B2B service जो आपके vehicle alignment है, जो trucks जो आपके transport करेंगे आपके mother warehouse से Shiprocket warehouse को. We do have that service in house, and so integrated service. आप बोलते हैं आपके मदर वेयरहाउस से शिपरॉकेट के 4 वेयरहाउसेस में इन्वेंट्री जाएगी. We'll plan that for you. We'll align the vehicles आपके again उसमें भी आपको pay as per your usage है. पार्ट ट्रक लोड चाहिए, फुल ट्रक लोड चाहिए, वो सारी सर्विसेज भी हम आपको अलाइन करके देते हैं. एंड ऑफ कोर्स वेयर हाउसिंग जहाँ होता है तो व्हीकल अलाइनमेंट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें हम आपको मैनेज करके देते हैं. वी टेक द होल बर्डन ऑफ योर प्लेट and we let you do what you're good at, making the brand. I think pretty much it. I hope I covered a lot of points today, and I try to break it down in all to the as layman as possible, because warehousing में आज भी basics बहुत matter करते हैं. कि warehousing का एक basic वही है कि inventory customer के सबसे पास पड़ी होनी चाहिए और जल्दी पहुंचनी चाहिए. So इन दो चीजों को मेटा लेवल पे पूरी करने के लिए बहुत सारे डिटेल प्रोसेसेस हम लोग बनाते हैं. सो इवेंचुअली आपका काम है अपना ब्रांड बनाना, हमारा काम है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवाना, उसको इन्वेंटरी सबसे पास स्टोर करना, अच्छे से स्टोर करना, और इस इन्वेंटरी की डेली मेट्रिसेस आपको ये बताना कि हाउ दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर इन्वेंटरी एंड योर कॉस्ट. So I think great talking to you, and thank you so much. You can please write your email on the email address given below, and we'll be soon reverting on all your queries. Thank you.